last minute. I wasn't able to do it. And then I was very depressed. And then I got a call from Mahesh bhai ke, listen, there's this role of, there's a story of two girls, एक बड़ी opposite लड़की और एक दूसरी type की. Will you be interested? And I was like, I just want to do my debut because all my life I was like, I want to be an actor, and my parents were like, नहीं पढ़ाई पहले फिर कुछ और. तो वो I think A levels के फौरन बाद जब I wanted to be one, mama was like, नहीं degree. So I was like, I just want to jump out of the degree and come on screen. This was my degree ली माँ बाप को खुश करने के लिए कि लो भी मैंने ले ली है. हाँ, but वो इधर से ही ले लेती इतने पैसे खर्च लिए. नहीं, बट मैं ये कहती हूँ process ऐसा वो हुआ कि मुझे law पसंद बहुत आ गया and मुझे मजा आया पढ़ने में. और क्या पढ़ा law में exactly? So LLB मैंने किया हुआ है. LLB में there are 3 years और 3rd year में आप choose करते हैं subjects. के अंदर का lawyer अभी पूछते हैं कि So अंदर I के did lawyer. evidence law, I did evidence law, intellectual property law, Right. and these were my majors in the last year. ठीक है. But उसके बाद it was just acting और मुझे याद है मैंने practice भी internships भी सिर्फ वो जो year की gap में थी ना उसी में करती थी. मैंने उसके बाद भी practice कुछ नहीं किया गई वापस आई. But I was like, बस मुझे acting करनी है. मैं कराची आई because I'm Lahore based. I started giving auditions and one I got approved and all of that, and then Dilruba came and I just went on the set, not knowing what a supporting is, what a lead is, just being like, I'll be doing finally and what I wanted to. And it was a pretty central character. It was. Lead नहीं था लेकिन pretty central था and people noticed. Yeah, it was. I wasn't expecting what I remember जब पहला episode आया and I was like मैंने क्या कर लिया. और मुझे याद है उसमें मुझे वो थोड़ी tan करने के लिए base भी लगाई थी वो सब because she was supposed to be a and they were projecting it in a way that the more beautiful and the less beautiful girl. Right. तो वो वाला हम कर रहे थे. तो I was perfectly fine doing all of that. तो वो जब मैंने किया और जब मैंने देखा स्क्रीन पे I was like अब तो मुझे काम नहीं मिलने वाला है. मैं क्या लग रही हूँ क्या कर रही हूँ. And I love how less beautiful का मतलब है tan कर दो. Yeah, that's so sad. That's so sad. And I remember मैं उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज में गई सब was like आपने टीके लगवाए हैं आपने कुछ किए. मैंने कहा नहीं यार मैं ऐसे ही हूँ. But that's how it was. Yeah. And then हम COVID में थे and Nadeem Beg called me and he was like listen there's a script because मैंने सबसे पहला सिग्मा में audition दिया था. And listen, there's a script and we have to shoot it in between COVID. So March में he called me कि हम April में shoot कर रहे हैं. Bharas, which was my first lead. And then I went on doing that. And then came Pardes. And then came कैसी तेरी खुद कर दी. Bharas somehow हमसे miss हो गया. Yes. And, though it was a very hit masses kind of a project. वो miss हो गया. Pardes of course हमने follow किया पूरा. और कैसी तेरी गुजगर्जी भी हमने फॉलो किया. किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? I mean over a billion views man. That's a lot माशाल्लाह. Like I said 3 dramas जिनको over a million views मिले उसमें से ये एक है. But आपके पास स्क्रिप्ट आया, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और आपके अंदर की औरत ने क्या कहा कि महक. तो अब्दुल्ला अच्छा मुझे ना स्क्रिप्ट पढ़ने का मैं एक बात कहने लगी हूँ. मेरी अम्मी मेरी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं. अच्छा ओके. कैसी तेरी खुदगर्जी was the only script that मेरी अम्मी तक नहीं. ओके ठीक है शायद इसमें बेहतरी थी. तो क्योंकि मामा को भेजती हूँ उनको रीडिंग का बहुत शौक है तो वो बहुत जल्दी से मुझे सिनॉप्सिस एक बता देती हैं. कैसी तेरी खुदगर्जी पहले अब्दुल्ला भाई कॉल्ड में अब्दुल्ला सेजा एंड ही ऑफर्ड मी 2 other projects. And they were like, listen, ये भी कर लो और एक और प्रोजेक्ट मेरे पास 2-3 महीने बाद भी आ रहा है. I want you to do that. But I am the sort of person मैं एक ही प्रोजेक्ट कर सकती हूँ और ये शुरू से मेरा है. मुझसे नहीं होता. एक तो I can't live in Karachi for a very long period. I like going back home and then coming here and I like being focused with one project. ठीक है. तो मैंने कहा नहीं मैं ये और मुझे अहमद भट्टी डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा लगा था. So he called me, he was like, listen, there's an Ahmed Bhatti project. That's all what he did. I was like, yeah, let's do this. Like, come meet me. So he told me the synopsis. तब तक 3 से 4 एपिसोड. उन्होंने क्या synopsis बताई थी? उन्होंने मुझे underlining themes बताई थी. उन्होंने मुझे कहा था अच्छा एक ड्रामा था बहुत पॉपुलर उस जैसी underlining themes हैं और ऐसे है. It's a सोलो लीड काइंड ऑफ अ गर्ल स्टोरी. इट्स भाई वो जो हमारी ऑडियंस को मासूम लड़की पसंद आती है जो कि तुम हो तुम्हारी शक्ल पे है तो वो कर लो. और आई फील लाइक अहमद भट्टी भाई बहुत अच्छा डायरेक्ट करेंगे एंड ये लड़की का करेक्टर है. ही इज वेरी वायलेंटली इन लव विद दिस गर्ल एंड ऑल ऑफ दैट एंड शी इज रिजेंटिंग थ्रू आउट द टाइम. दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो व्हेन आई साइंड द प्रोजेक्ट एंड आई वुड अग्री टू इट दैट आई रेड द फर्स्ट 10 episodes.
and I knew कि there will be all what you see, जो आप सबने देखा 10 episodes में, but little to my knowledge, I knew about how it's going to be projected, because not many people know this, especially people who are off screen, कि जो हम script में पढ़ते हैं, जब आप ऑन सेट जाते हैं और जब कैमरा वर्क, एडिटिंग, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन होती है, तो बहुत से नैरेटिव्स चेंज हो जाते हैं. सो टू माय लिटिल नॉलेज, what we saw on screen was much bigger than what was written on the paper. ठीक है. So this is what I have read. The first 10 episodes was what I read and went on to shooting. मगर हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली इतनी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं ऑन वायलेंटली इन लव मेल लीड्स कि इतनी समझ आ जाती है कि एंड में ये वायलेंटली इन लव मेल लीड जो है ये निकल जाएगा पतली गली से, और या ये अमर हो जाएगा या ये ग्लोरीफाई हो जाएगा, लेकिन लड़की को इससे प्यार जरूर हो जाएगा. You know, why now today I can sit here and agree to most of the things, but a year back, so we shot Kaisi Teri Khudgarzi last year, and we wrapped it last year December. So we're talking about a project that I did a year ago, when I had little knowledge to what scripts I should be choosing. I knew the kind of themes I would want to do, but I had little knowledge, and mere liye I knew that this is not an art that we are producing. I will not disagree to it, or I will not denote it in any way. I knew what I'm stepping into, but I knew the repercussions of the script that this is going to give me. Because I would never hold it against you for signing Kaisi Teri Khudgarzi, because एक तो ये है कि मेरे ख्याल है कि ये एक it became landing ground for you, so why not? आपने तो नहीं लिखा. There's no point, like you know, I was thinking for the past 6-7 months everybody wanted to talk about this, and I was thinking why did I sign this? And then I thought I knew what it's going to get me into, the good and the bad. And I'm always, and wherever I go, I'm going to own this project, because no matter what, I signed this with all my consent. Nobody forced me to do this. I knew the repercussions it's going to get, the good, the bad, the views, because I knew it's... Did you know कि views इतने आएंगे? I had a feeling when I was reading the script, because gut feeling, and also when you... Mostly क्या होता है जब आपका setup ऐसा होता है ना, it's Ahmed Bhatti project. He really is somebody who looks into his script. Pace बड़ी अच्छी थी उनके ड्रामे की. मैं हमेशा ये देखती हूँ, शुरू दिन से मुझे स्क्रिप्ट का कुछ नहीं पता था. मैं ये देखती थी डायरेक्टर कौन है, मैं उनका काम पहले देखती थी. मैं देखती थी उनको कनेक्ट करना आता है, स्टोरी जोड़ना आता है, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई लव connecting them in my mind. So I know कि डायरेक्टर अच्छा होना इतना important है. You can give the best script, but अगर उससे कहानी जोड़नी नहीं आई तो वो स्क्रिप्ट अच्छी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी. तो my 60% of the reason to sign this project was Ahmed Bhatti Saab, because I think he was one of the best directors we have in our country. Radhen Shah bhi progressive stories and Radhen Shah, the writer, I looked up to him, because हमारे लिए we Google everything. Of course. So I Googled him, and he has written some really nice scripts. And I got an offer for one of his previous scripts too that went on to Hum TV. So I had that offer too, और वो भी अच्छी script थी. वो मेरे schedule की वजह से, परदेश की वजह से मैं नहीं कर पाई. But I knew he's a good writer too. So for a fact I knew that maybe पहले 8 episode ऐसे ही जा रहे हैं, but I had a gut feeling that he might mold it well, execute it well. ठीक है. Was it an easy character to do? आसान था महक करना? महक was a character that was far inches away to who I am as a person. मेरे लिए महक जितना मुश्किल था, मुझे नहीं लगता कोई अभी तक जो मैंने किया है वो था. बाहर एक सिंपल कैरेक्टर है, लेकिन अगर आप नहीं है वो आप नहीं है. वो 10-10 के गज के दुपट्टे आप नहीं लेते. आपने वो दुपट्टे सिर्फ लेने नहीं है, आपने फील करना है कि आप लेते हैं. आप वैसे बात नहीं करते, आप इतने सहमे हुए हर वक्त, आपका तलफ़ुज़ बोलने का, आपकी पेस and all of that. And Bhatti bhai made sure that I look like Meg, I feel like Meg. I remember going on the set the first day and wearing my jeans and khula kurta and like sneakers, and he's like, एक तो तुमने अब चप्पल पहननी है, एक तो तुमने ऐसे बैठना है, एक तो just try adding some blush, makeup that I run away from. You have to have these लंबे lock hair and all of that. तो वो उन्होंने कहा ये करना है अब.